Okay, so we started the chapter class 6, the geography, India, climate and vegetation and wildlife. Today we will be completing the chapter and we will be quickly revising all the things once again. We'll be completing the back exercises as well. Okay, so I wish that you are able to understand and you are listening the lectures very carefully. You're writing the notes that are being provided to you. So with that belief, let's start for today. And today we'll be completing the series of class 6 the geography lectures from my side on behalf of this platform. All right, so we just have a very quick revision. हम एक quickly revision करते हैं what all things we have covered. We'll be revising everything from this notes. हम इस notes से revise करते हैं. In the previous lecture, if you remember, we did the natural vegetation and natural vegetation में हमने काफी सारे forest discuss करे थे. ठीक है, we talked about what is the meaning of the word natural vegetation. Natural vegetation का meaning क्या होता है? The variety of the plant life which is found in our surroundings, that is bushes, shrubs, tall trees. Then हमने definition देखी थी natural vegetation की. What was the definition of natural vegetation? We moved ahead discussing that there are various types of forests that we see: tropical evergreen forest, deciduous forest, thorny bushes, mountain vegetation, mangrove forest, right? And we completed this topic of natural vegetation from your book itself. Now, today that we have to do is the leftover portion of this chapter, and then we'll be completing this chapter today itself. So, come to this last topic, why are forests necessary? Come to this topic, why are forests necessary? All right. Forests are very useful for us. They perform various functions. Plants release oxygen that we breathe and they absorb carbon dioxide. Okay, so जो भी आपको forest दिखाई देते हैं, whatever natural vegetation we see, the types of forests that we have studied, they are of very useful to us. ठीक है, वे बहुत ज़्यादा useful होते हैं हमारे लिए. They are very important. That is why आप अक्सर देखते हैं कि आपके स्कूल में आपको प्लांट्स का कंजर्वेशन, अर्थ को कैसे हम सेव करें, प्लांट्स को ग्रो करा जाए, ठीक है, किस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व करें, हाउ शुड वी कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज. Often these things are being taught to us in our schools. Not only this, but government also run various campaigns regarding the conservation of the natural resources, because forest ये आपकी एक natural resources है. These are the natural resources, right? And they perform various functions. Plants release oxygen that we breathe. ओके, सो दैट इज वाई आप देखते हैं कि पेड़ लगाना कितना जरूरी है. पेड़ लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीजन बीइंग बिकॉज दे प्रोवाइड अस विद द वेरी क्रूशियल गैस दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन, जिसे ऑक्सीजन बोला जाता है. एंड ऑक्सीजन आपको पता है, दिस गैस हेल्प्स अस इन द ब्रीदिंग. ये ब्रीथ करने में हमें बहुत हेल्प करती है. एंड इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल. ओके, सो प्लांट्स आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एंड ऑन द अदर हैंड यू सी दैट प्लांट्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इफ यू रिमेम्बर, हमने आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करी थी जब हम आपका एटमॉस्फेयर डिस्कस कर रहे थे. व्हेन यू वर डिस्कसिंग एटमॉस्फेयर, वन ऑफ द मेजर डोमेन्स, राइट, जब हम एटमॉस्फेयर डिस्कस कर रहे थे तब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में डिस्कस करा था. एंड देयर वी सी दैट किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक अमाउंट में आपके अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट होता है इन द गैसियस लेयर्स, एंड हाउ दिस carbon dioxide prevents the heat waves, radiation of the heat waves, जो आपके अर्थ सरफेस पे heat waves वापस से रेडिएट बैक करती हैं एटमॉस्फेयर में. ये उन वेव्स को, हीट वेव्स को स्टॉप कर देता है. बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एक्सप्लेन्ड यू, ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है, ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना होने लगेगा. राइट, ये पूरा प्रोसेस हमने उस चैप्टर में समझा था. ओके, सो इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, सो दैट ये इतना ज्यादा टेम्परेचर्स में इंक्रीज नहीं आए अर्थ सरफेस के, प्लांट्स ग्रो करना बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाई फॉरेस्ट कवर मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी कंट्री हैज टू मेंटेन certain percentage of the forest cover. It is compulsory for every nation
टू मेंटेन द फॉरेस्ट कवर, इतना फॉरेस्ट कवर आपके पास में होना जरूरी है, ठीक है। बिकॉज ये फॉरेस्ट जो है, ये आपके जितने भी फॉरेस्ट होते हैं, ये सारे के सारे आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके अर्थ पर टेम्परेचर्स मेंटेन रहते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल द सॉइल इरोजन, ठीक है। ऑल्सो आप देखते हैं प्लांट्स जो है वो सॉइल में उनकी जो रूट्स होती हैं उन्होंने सॉइल को ग्रैब कर रखा होता है, सॉइल को होल्ड कर रखा होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आई हैव डिस्कस दिस विथ यू, कि जो भी आपके ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन के प्रोसेस को अवॉइड करा जाता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर। देर आर वेरियस यूजेस ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की मल्टीपल यूजेस होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल एज वुड, वुड क्यों चाहिए होती है, वुड इज यूज्ड एज अ फ्यूल। देन फॉडर, एनिमल्स को फॉडर चाहिए होता है, दिस इज द फूड ऑफ एनिमल्स। मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, लाख, हनी, गम, ऑल दीज आर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ये सारे क्या है, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ का ये नेचुरल हैबिटेट होते हैं। वाई? बिकॉज जितने भी आपकी वाइल्ड लाइफ है उनको रहने के लिए जगह चाहिए, एंड वेयर विल दे लिव, सो दे विल बी लिविंग इन दीज फॉरेस्ट एरियाज। वाइल्ड लाइफ इन फॉरेस्ट एरियाज में ही रहती है, क्लियर। Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of the trees. This is already we know that कितना large scale पर destruction करा जाता है, trees cut कर दिए जाते हैं। We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of the trees. So every time we need to plant the trees, we need to aware the people, we need to tell them the importance of the trees. We can have some special programs like One Mahotsav to involve more people in making our earth green. So ये कुछ special programs होते हैं जो government चलाती है, like we have One Mahotsav. One Mahotsav बहुत ही famous एक प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम है अर्थ को बचाने के लिए, अर्थ को ग्रीन रखने के लिए। सो एवरी ईयर यू सी दैट अ लॉट ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। वन महोत्सव के तहत बहुत सारे ट्रीज प्लांटेशन करा जाता है। ऑलराइट, so these are things that you get from the forest. What do you get from the forest? You can see here, you get oxygen, you get medicines, shelter, fodder, then fuel, sports goods, furniture, soil binding, rubber, timber, natural habitat for wildlife, gum and lark, then fruits, honey. ठीक है, ये सब चीजें आपको जो है आपको फॉरेस्ट से मिलती है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हम आपके वाइल्ड लाइफ के टॉपिक पर आते हैं। Forests are home to a variety of wildlife. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. ठीक है, तो आप देखते हैं कि फॉरेस्ट जो है they are a home to wide variety of the wildlife. ठीक है, वहां पर आपको वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी वेराइटीज मिलेंगी। You will find n number of species in these forests. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects, and worms which dwell in the forest. The tiger is a national animal. It is found in various parts of the country. Gir forest in Gujarat is the home of Asiatic lions. तो गुजरात में एक आपकी गिर फॉरेस्ट है और उन गिर फॉरेस्ट में आपको एशियाटिक लायंस देखने को मिलते हैं। Elephants and one-horned rhinoceros roam in the forest of Assam. Elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camels and wild asses are found in the Great Indian Desert and the Run of Kutch respectively. So you can see that such a wide variety of the species you can see is present in our country, and you won't be finding them in any one specific corner. आप जिस कॉर्नर में जाएंगे आपको वहां पर एक नई वैरायटी मिलेगी। You will find something very new. Wild goats, snow leopards, deers, etc. These are found in the Himalayan region. Besides these, many other animals are found in our country, such as monkey, wolf, jackal, nilgai, cheetal, etc. India is equally rich in the bird life as well. You will find a number of birds existing in our country. आपको बहुत सारे birds भी मिलते हैं हमारी country में. The peacock is the national bird. Other common birds are parrots, pigeons, myna, geese, bulbul, duck. These are several bird sanctuaries
There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat, okay? Because देखो natural habitats को maintain करना बहुत जरूरी है. हम day by day, time by time, as we are moving ahead, the generations are coming, आपको land चाहिए. So land के लिए क्या करा जाता है, पूरे के पूरे forest को clear कर दिया जाता है, right? And therefore you see कि ये जो animals हैं, ये wildlife जो होती है, जो भी इनका natural habitat होता है, which is their place to live, that place gets destroyed. उस place को destroy कर दिया जाता है. So in order to save that places, उन places को save करने के लिए ये natural habitats बनाए गए हैं. पूरे के पूरे इनको रिजर्व कर दिया जाता है. These areas are actually reserved. यहाँ पे at times you will find that people are also not allowed to even enter. And if people are allowed to enter, then they are not allowed to do any of the एक्टिविटीज देयर. वहां पर आप किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं. यू मे गो एंड जस्ट हैव अ विजिट टू इट. आप सिर्फ जाकर के उस जगह को देख के आ सकते हैं, बट यू कैन नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ कोई भी आप एक्टिविटीज वहां पर नहीं कर सकते हैं. इलीगल माना जाता है, ठीक है. दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स, क्योंकि हंटर्स जो है आपको पता है, दे हंट. Hunting and gathering has been one of the major economic activity of our ancient times. पुराने जमाने से आप देखते हुए आ रहे हैं कि जब लोगों को धीरे धीरे नॉलेज गेन हुई, उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा, जो उस समय मेजर ऑक्यूपेशन रहा है लोगों का, या जो प्राइमरी एक्टिविटी रही, दैट वाज हंटिंग एंड गैदरिंग. हंटिंग एंड गैदरिंग की मेजर एक्टिविटी थी. सो स्टिल यू सी दैट देयर आर हंटर्स हु हंट एनिमल्स, राइट? दैट इज वाई उनसे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से नेचुरल हैबिटेट्स बना दिए गए हैं. Can you name 5 birds that are commonly found in your area? आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर. There are several hundred of species of snakes found in India. You will find a variety of snakes in India as well. Cobras, kraits, these are some of the important among them. Due to cutting of the forest and hunting, several species of wildlife of India are declining rapidly. क्योंकि हम इतना जल्दी इनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. अगर आज हमारा कोई घर डिस्ट्रॉय कर दे, वेयर विल यू एंड मी लिव? आप और मैं रहेंगे कहाँ जाकर के, राइट? सो इन द सिमिलर मैनर दीज एनिमल्स आर आल्सो हैविंग देयर नेचुरल हैबिटेट. ये नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं. So what is happening is gradually and rapidly you see that forests are being cut down on a very large scale. और जब हम forest को इतना large scale पर cut करते हैं, इसे बोला जाता है deforestation. What do we call it? We call it as deforestation. Okay. So अब जब हम इतना large scale पर forest को cut करते हैं, so what happens? पूरा का पूरा आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है. उस पूरे रीजन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज प्लांट्स की वजह से, ट्रीज की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से बहुत सारी चीजें कंट्रोल करी जाती हैं. बिकॉज आपको पता है फॉरेस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं विद ऑक्सीजन. दे आर एब्सॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है. नॉट ओनली दिस, बट यू सी दैट दे आर प्रोवाइडिंग विद एम्पल नंबर ऑफ गुड्स. इतने सारे आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं. दे आर प्रोवाइडिंग विद वुड एज अ फ्यूल विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल. फर्नीचर के लिए आपको यूज करना होता है वुड, राइट? Also you see gum, raisins, all these are found from the forest. These are a forest product hai. Okay, and you see forests are being rapidly cleared down. So this also affects the climate. ये climate को भी affect करता है. आपके rainfall patterns भी disturb हो जाते हैं. Okay, many species have already become extinct. ऐसे काफी सारे species हैं जो already आपके extinct हो चुके हैं. In order to protect them, many national parks, sanctuaries, biosphere reserves have been set up. So इनको सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे हम देखते हैं नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, ठीक है. सेंचुरीज बनाई जाती हैं. The government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals. Okay. You can also contribute in conserving the wildlife. You can refuse to buy things made from parts of the bodies of animals such as their bones, horns, fur, skins, and feathers. Every year we observe Wildlife Week in the first week of October to create awareness of conserving the habitats of the animal kingdom. ठीक है, हर साल आप देखते हैं कि अक्टूबर के अंदर वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस वीक मनाया जाता है. एवरी ईयर दिस इज सेलिब्रेटेड सो दैट हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें. All right, you can see in this pictures large scale poaching
Okay, poaching is basically killing of animals, illegal killing of the animals, because nobody has the right to kill the animals. ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि आप एनिमल्स को किल करें. Okay, so you can see how tiger reserves must be relocated, tiger crisis आ जाते हैं. ठीक है, so these you can see the pictures over here. यहाँ पर एक आपको बॉक्स दे रखा है माइग्रेटरी बर्ड्स का. Some birds such as pelicans, Siberian crane, stork, flamingo, pintail, duck, curlew migrate to our country in the winter season every year. हर साल आप देखते हैं कि बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करके हमारी कंट्री में आते हैं. Siberian cranes migrate from Siberia. They arrive in December and they stay till early March. ठीक है, ये यहाँ पर इतनी सारी बर्ड्स जो हैं वो हमारी कंट्री में आपको दिखाई देती हैं. They often migrate and they come to our country. All right. So with this we complete the topic of wildlife also. Wildlife का topic भी हमने complete कर लिया है. And we completed your why forests are important. Okay. So with this we complete your chapter India climate, vegetation and wildlife. Now we'll have a quick revision to it. हम फटफट से इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करते हैं. ठीक है, एंड देन वी बी वाइंडिंग अप दिस चैप्टर टुडे विद द बैक एक्सरसाइजेस. All right, so we started our chapter with understanding the difference between weather and climate. Weather and climate के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से हमने शुरुआत करी थी. एंड वी गॉट टू नो, सबसे पहला टॉपिक जो हमने कवर करा था आपका वो क्लाइमेट टॉपिक कवर करा था. वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. So please keep on noting down the questions. आप questions note down करते रहें. So very important first question यहाँ से ये बन सकता है कि weather की definition बताएं. What do you mean by weather? Clear? So weather क्या होता है? It is the day-to-day changes in the atmosphere. It includes changes in temperature, rainfall and sunshine, etc. The major seasons recognized in India are कौन-कौन से major seasons होते हैं? Again, one of the important question. Name the major seasons. Cold weather season, winter season, December to February. Hot weather season, summer season, March to May. Then we have southwest monsoon season, that is your rainy season, June to September. Then season of retreating monsoon, autumn season, October and November. So again, a very important question from here, that is name the major seasons recognized in India. All right. Next question can be from here, climate. Define climate, or what do you mean by the word climate? Climate is the average weather conditions which have been measured over many years. ठीक है, यहाँ पर years आएगा. ठीक है, which have been measured over many years. So here you can have a question that differentiate between climate and weather. So this can be one of the questions. ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, differentiate between climate and weather. Very very important question. So please आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें. You should write the answer of this question in your notebooks. We have discussed it many times. Now we come to the seasons. We will be discussing about seasons. So the first season is your cold weather season or the winter season. I am repeating again. नदर्न इंडिया में आपके कोल्ड वेदर सीजन या विंटर सीजन कब होगा, जब आपके सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं कर रहे हैं नदर्न हेमिस्फीयर में. सन रेज आर फॉलिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर. दैट इज व्हाई आप देखते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में आपके विंटर्स होंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगे. इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट. ये पूरा प्रोसेस जो है ऑपोजिट चलता है. हॉट वेदर सीजन और समर. इन द हॉट वेदर सीजन the sun rays you see that they are more or less directly falling in the region. That is why आप देखते हैं कि northern hemisphere में समर सीजन होंगे. एंड समर सीजन के अंदर आपके विंड्स ब्लो करती हैं जिनका नाम है लू. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लू? लू से आप क्या समझते हैं? डिफाइन लू. यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप इसे डिफाइन करें. देन कम्स साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और द रेनी सीजन. सो दिस कैन बी आस्क्ड यू. आपसे पूरा मैकेनिज्म भी पूछ सकते हैं कि हमारे साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन का मैकेनिज्म समझाएं. तो आप ये लिखेंगे दैट ये जो सीजन होता है बेसिकली दिस इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड द एडवांसमेंट ऑफ द मॉनसून.
जो विंड्स होती है वो आपके अरेबियन सी पर से और बे ऑफ बंगाल से फ्लो करती हैं. दे ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल एंड दे ब्लो टुवर्ड्स द लैंड. वाटर बॉडी से ये विंड्स आपकी कहाँ आती है, लैंड पर आती है. ठीक है, दे कैरी मॉइस्चर विद देम. When these winds strike the mountain barriers, rainfall occur. I explained you the complete process. किस तरीके से आपके अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच की जो विंड्स है वो आपकी कंट्री में एंटर करते हैं. एंड आफ्टर एंटरिंग द कंट्री दे एक्चुअली स्ट्राइक द माउंटेन. वो माउंटेन से स्ट्राइक करते हैं जिसकी वजह से आपकी कंट्री में रेनफॉल होती है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी कंट्री में कौन सी विंड्स मॉनसून लेकर के आती हैं? So the name of the winds which bring monsoon is the southwest monsoon winds. Southwest monsoon brings rainfall in our country. When we have the season of retreating monsoon का मतलब होता है कि आपकी कंट्री से मानसून अब बाहर जा रहा है, because now slowly and gradually you see that winters are entering your country. So winds move back from the mainland to the Bay of Bengal. अब winds जो है वो वापस से आपके mainland से बाहर जा रही है Bay of Bengal की तरफ. And this is the season of the retreating monsoon. Southern parts of India को बारिश इस पर्टिकुलर मॉनसून से मिलती है. जो आपका तमिलनाडु वाला रीजन है, they will be receiving rainfall from this monsoon. Then we discuss the climate of India. हमने climate of India discuss करा था, whereby we talked that climate of India has broadly been described as monsoon type. ये word कहाँ से आया है? ये word एक Arabic word है, मौसम word से आया है जिसका meaning होता है season. Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by the monsoon winds. आपको पता है इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है. ट्रॉपिकल रीजन में क्यों लाई करता है? बिकॉज हम ट्रॉपिक्स के पास में है. ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया. देन वी हैव योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यहीं पर ही आपकी कंट्री आती है. दैट इज वाई हम इसको बोल रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन. एग्रीकल्चर हमारी कंट्री के अंदर पूरा का पूरा रेनफॉल पैटर्न पर डिपेंड करता है. देन वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ. देन एग्जाम्पल ऑफ रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. हमारी कंट्री के अंदर इतना सारा वाइड वेरिएशन है क्लाइमेट्स को लेकर के. जैसलमेर और बीकानेर रीजन में आप देखेंगे तो वहां पर हॉट क्लाइमेट मिलेंगे. यू विल फाइंड दैट द क्लाइमेट इज वेरी वेरी हॉट. ऑन द अदर हैंड जम्मू कश्मीर अगर हम पहुंच जाए तो वहां पर आपको कोल्ड वेदर कंडीशंस मिलेंगे. राइट. कोस्टल प्लेसेस की बात करें तो कोस्टल प्लेसेस में आपको मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है. दे आर नीदर टू हॉट नीदर टू कोल्ड. ओके. देन मौसनराम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पर रिसीव होती है. ऑल राइट. ऑन दी अदर हैंड जैसलमेर इन राजस्थान अगर देखें तो वहां पर आपके वी कैन से वेरी लेस रेनफॉल और इवन नो रेनफॉल. देन डिफरेंट नेम्स ऑफ रेन्स. कौन कौन से अलग अलग नाम हैं, अलग अलग भाषा में रेन को किस नाम से बुलाया जाता है? हिंदी में, उर्दू में, बंगाली में, मराठी के अंदर. देन वी डिस्कस नेचुरल वेजिटेशन. फिर हमने नेचुरल वेजिटेशन डिस्कस करा था. इट इज अ वेराइटी ऑफ द प्लांट लाइफ विच इज फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स. कौन कौन सी वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ मिलती है? बुशेस, श्रब्स, टॉल ट्रीज. ओके. और ये सारी चीजें जो भी हैं, दिस नेचुरल vegetation is called as natural because they grow on their own. इनको कोई भी human beings grow नहीं करते हैं. The grasses, shrubs, trees which grow on their own without any interference or help of human beings, they are called as natural vegetation. How natural vegetation differs? Different type of natural vegetation depend on different type of climatic conditions. I told you क्लाइमेटिक कंडीशंस नेचुरल वेजिटेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है. राइट. ड्यू टू द वेराइड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया हैज वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. हमारे यहाँ पर इतनी सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अलग अलग आपको यहाँ पर क्लाइमेटिक वेदर कंडीशंस मिलते हैं. दैट इज व्हाई वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन. वी सी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, हॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. Okay, we discuss them one by one again. Tropical rainforest, rainfall found in the areas with very very heavy rainfall. ऐसे areas मिलेंगे जहाँ पर rainfall बहुत heavy है. Characteristics क्या है? They are so dense that sunlight doesn't reach the ground. Sunlight कभी भी ground पर नहीं पहुंच पाएंगी. इतने dense होते हैं, ऊपर से इतने dense होते हैं that the sunlight doesn't reaches the ground.
Many species of trees are found in these forest. कौन कौन से species मिलते हैं, अलग अलग species यहाँ पर मिलते हैं. Therefore they always appear green and they are called as evergreen. ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रीज के स्पीशीज मिलेंगे. यू सी दैट ये जो ट्रीज होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के, ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं अलग अलग समय पर. दे शेड देयर लीव्स इन डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर. ठीक है, सारे के सारे ट्रीज एक साथ अपनी लीव्स शेड नहीं करते हैं, अलग अलग टाइम पर ये शेड करते हैं. दैट इज वाई आपको हमेशा ग्रीन दिखाई देंगे. कौन कौन से ट्रीज हैं यहाँ पर जो मिलते हैं, मोहगैनी, इबोनी, रोजवुड. देन एरियाज की बात करें, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नैरो स्ट्रिप ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. राइट, सो आपको ये मैंने सारे एरियाज मैप में भी दिखाए थे. वी आर जस्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग. ओके, सो यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. आपको पूरा का पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्सप्लेन करने को बोल दिया जा सकता है. तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यू विल बी राइटिंग लाइक दिस. आप उसमें सबसे पहले लिखना रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, फिर आप उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिख करके आएंगे. देन थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे कौन कौन से वहां पर ट्रीज मिलते हैं, एंड देन यू विल राइट एरियाज. ठीक है, सो व्हेन यू विल बी राइटिंग योर आंसर इन दिस फॉर्मेट, जब आप अपने आंसर को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, you will be scoring very good marks. Then come tropical deciduous forest. So आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, tropical deciduous forest and evergreen forest में डिफरेंस क्या होता है, and this we have discussed many times. ठीक है, tropical deciduous forest they are called as monsoon forest. Then इनके characteristics क्या होते हैं, they are found in large part of our country, they are very less dense. ये अपनी लीव्स शेड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर. इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से हैं यहाँ पर, साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम. रीजन्स कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, some of the parts of Maharashtra as well, Odisha as well. Okay, so if it is asked explain tropical deciduous forest, आप ऐसे कैसे लिखकर आ जाएं. ठीक है, डिफरेंस अगर पूछा जाता है आपसे एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस में, सो यू विल सी दैट द डिफरेंस इज shedding of leaves. The difference will be in shedding of the leaves. कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अपनी लीव्स को एक पर्टिकुलर टाइम पर शेड करते हैं. ऑन द अदर हैंड वी सी दैट एवरग्रीन फॉरेस्ट दे शेड देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर बट इन डिफरेंट टाइम स्लॉट. देन थॉर्नी बुशेस, कैरेक्टरिस्टिक ड्राई एरियाज में आपको मिलेंगे कंट्री के. द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. देन कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं, कैक्टस, केर, बबूल, कीकर. रीजन कौन कौन से हैं, कहां पर आपको ये थॉर्नी बुशेस मिलेगी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात. देन कम्स योर माउंटेन वेजिटेशन. सो अगेन माउंटेन वेजिटेशन पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माउंटेन वेजिटेशन में आपको किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, इन माउंटेन वेजिटेशन का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द माउंटेन वेजिटेशन. सो इट इज कॉनिफेरस ट्रीज. इनको दूसरा नाम क्या है, कॉनिफेरस ट्रीज. क्यों, बिकॉज कॉनिकल शेप के होते हैं. कितनी हाइट पे ये मिलेंगे, 1500 to 2500 मीटर्स की हाइट पे मिलते हैं. ऑलराइट, कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, चीड़, पाइन, देवदार. दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रीज. देन वी हैव मैनग्रोव फॉरेस्ट. मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. आपको पता है कि ये सलाइन वाटर में सर्वाइव करते हैं. सुंदरी इज अ वेल नोन स्पीशी ऑफ ट्री विच इज फाउंड इन द मैनग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर विच द सुंदरबंस हैव बीन नेम्ड. रीजन्स कौन कौन से हैं, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. देन recently we discussed about why are forest necessary. forest क्यों important है, very useful, perform various functions, बहुत सारे functions perform करते हैं. plants they release oxygen, absorb carbon dioxide, control soil erosion because ये जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो आपके सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, और अगर आप ट्रीज को कट कर देंगे तो जितनी भी सॉइल है वो आपकी लूज हो जाएगी. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिन, हर्ब्स, लाख, हनी, गम एक्सेट्रा. फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए. नेचुरल वेजिटेशन आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दी गई है कटिंग ऑफ द ट्रीज की वजह से. सोल्यूशन क्या है, कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, प्लांट मोर ट्रीज. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करा जाए, प्लांटेशन एक्टिविटीज करी जाए, वन महोत्सव प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे जाए. नाउ वी कम टू वाइल्ड लाइफ.
Forests are home to variety of wildlife. Forest आप देखते हैं, they're home to variety of the wildlife. You will find many types of animals, birds. आपको बहुत सारे birds मिलेंगे, animals मिलेंगे. ठीक है, you will find number of reptiles, mammals, birds, insects, worms. नेशनल एनिमल कौन है आपका? टाइगर है. गिर फॉरेस्ट कहाँ लोकेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेशनल एनिमल कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. गिर फॉरेस्ट गुजरात में लोकेटेड है. दे आर होम ऑफ एशियाटिक लायंस. सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, एशियाटिक लायंस आपको कहाँ मिलेंगे? वेयर विल यू फाइंड एशियाटिक लायंस? सो यू विल फाइंड देम इन द गिर फॉरेस्ट. असम फॉरेस्ट यू विल फाइंड वन हॉर्न राइनोसोरस, एलिफेंट्स. केरला एंड कर्नाटका में आपको एलिफेंट्स मिलते हैं. ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ में आपको कैमल्स, वाइल्ड एसेस. हिमालयन रीजन में यू विल फाइंड वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स एक्सेट्रा. अदर एनिमल्स फाउंड आर मंकी, वुल्फ, jackal, nilgai and cheetal. India is equally rich in the bird life. You will find a number of variety of the birds over here. Peacock are the national bird. Again, very important question. Bird sanctuaries have been created to give birds their natural habitat. Sanctuaries help in providing protection to birds from the hunters. Okay? So what is the purpose of sanctuaries? Sanctuaries क्यों important होते हैं? Then several species of snakes are found like cobra, crates. These are some of the important ones. In order to protect the wildlife which is declining rapidly and becoming extinct, various steps have been taken up, like नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, सेंचुरीज बनाई जाती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट. वाइल्ड लाइफ वीक बनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में. ऑलराइट, देन आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वाइल्ड लाइफ वीक कब बनाते हैं हम? देन माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, माइग्रेट कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट होके हमारे यहाँ पर आती है? साइबेरियन क्रेन कहाँ से माइग्रेट होकर आती है? साइबेरिया से माइग्रेट होकर के आती है. ऑलराइट, सो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर इन फ्रंट ऑफ यू. यू कैन नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स. ये पॉइंटर्स आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज में, बिकॉज दिस इज द कंप्लीट पॉइंटर्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू. आपका चैप्टर जो है उसको मैंने पॉइंट्स में पूरा कंपाइल करा है सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर लर्निंग. आपको याद भी करना होगा. There are so many things to remember, right? So it is easy that you write all these things. आप इसको लिखते जाएं, you will be able to learn it. Now come the exercise portion. आप exercise वाले portion पर आ जाएं. And this first part, answer the following questions briefly. This is your homework. ठीक है, ये आपका homework है. Which winds bring rainfall in India? We have discussed it many times. ये सारे क्वेश्चन मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ उस समय ही ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो कौन सी विंड्स है जो इंडिया में रेनफॉल लेकर के आती हैं और वो विंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? डिफरेंट सीजन्स कौन कौन से हैं? आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन. नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये भी अभी हमने डिस्कस करा. नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया. आज सारी वेजिटेशन डिस्कस करें. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, मैनग्रोव फॉरेस्ट, माउंटेन वेजिटेशन. डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन एंड डेसिडियस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज राइट द आंसर. Why is tropical rain forest also called as evergreen forest? क्यों इनको evergreen बोला जाता है? Told you the answer. So now you will be writing these answers in your notebooks. Question number 2 पर आ जाए. Take the correct answer. The world's highest rainfall occurs in Mawson Ram. Mangrove forest can thrive in saline water. Mahogany and rosewood trees are found in evergreen forest. Wild goats and snow leopards are found in, कहाँ मिलेंगे आपको wild goat and snow leopards? Himalayan region में. ठीक है. Then during the southwest monsoon period, साउथ मॉनसून के टाइम पर द मॉइस्चर लेडन विंड्स दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. बिकॉज ये बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, जो विंड्स मॉइस्चर कैरी करती हैं, वो आपके कहाँ पर ब्लो करती हैं? दे आर ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड. सी से लैंड पर जाती हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, हॉट एंड ड्राई विंड्स क्या बोला जाता है? विच ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर्स, दे आर कॉल्ड एज लू.
The states of Andhra Pradesh, Tamil Nadu receive a great amount of rainfall during the season of autumn or retreating monsoon. इसका नाम क्या है? Retreating monsoon. If you remember, हमने ये करा था, आपको बताया भी गया था कि साउथ इंडिया वाला जो रीजन है वो आपके रिट्रीटिंग मानसून से उसको बारिश मिलती है. All right, so the answer is retreating monsoon. Forest in Gujarat is the home of, I told you, which forest? Gir forest. किसके home? Asiatic lions. Dash is a well-known species of mangrove forest. कौन सा species है? Sundari tree. Then dash are also called as monsoon forest. किसे बोला जाता है monsoon forest? बताइए. ये आप सर्च करें. Monsoon forest किसे बोलते हैं? ठीक है. So this is the homework. Question 3 is also homework. Write down all the answers. Fill in the blanks. Okay. And question 1 is also your homework. All right. So with this, we complete your chapter. In the end of your book, please do have a note down to this. आपके last page book में यहाँ पर state and union territories दे रखी हैं. So please go through this. यहाँ पर आपको states के name दे रखे हैं. These are the names of the states over here. And these are the capitals. ये सारे के सारे आपकी capitals हैं. Please इनको याद करें. Learn all these. सबके आपको कैपिटल्स पता होने चाहिए. एंड जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं, wherever you are living, you should know the capital of your place and as well as the other state's capital. Okay. All right. So with this, we finish your class 6, chapter number 8. Not only chapter 8 we are finishing today, but we are finishing the class 6 geography lecture series. Okay. So I believe that whatever I have been teaching you since so far, we have covered the complete chapters. I have been giving you the notes as well. I'm asking you continuously to write those notes and pointers in your copies. Please do the homework. अगर आप lectures ध्यान से सुनते हैं, आपको homework करने में कोई problem नहीं आएगी. Okay? So keep learning, everyone, and wish you very, very good luck. Wherever you go with very good marks and to achieve great heights. Thank you, everyone.